हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन बेस्ड है जिसका नाम है वर्ड पैटर्न। ये प्रॉब्लम नंबर 290 है। लीड कोड पे आपको आराम से मिल जाएगी। और मैं इसमें जितना भी कोड यूज करूंगा वो गो लैंग्वेज में होगा। एक बार प्रॉब्लम समझते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है हमारे पास दो इनपुट है, एक है पैटर्न जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, दूसरा है एस जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। पैटर्न एक ऐसी स्ट्रिंग है जो हमें एक पैटर्न बताएगी और हमें चेक करना है कि जो एस स्ट्रिंग है वो पैटर्न को फॉलो करती है नहीं करती है। एग्जांपल से समझते हैं। अगर पैटर्न है ए बी बी ए और स्ट्रिंग है डॉग स्पेस कैट स्पेस डॉग, देन इन दैट केस अगर हम पैटर्न को चेक करें तो ए बी बी ए डॉग कैट डॉग ये स्ट्रिंग सेम पैटर्न फॉलो करती है, तो आउटपुट हमारे पास ट्रू आएगा। अगर मैं सेम पैटर्न को दोबारा ले लूं और इस बार स्ट्रिंग चेंज होगी डॉग कैट फिश, इन दैट केस ये जो स्ट्रिंग है यहां पे फिश होने की वजह से ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर पैटर्न ए है और स्ट्रिंग आ जाती है डॉग कैट डॉग, इन दैट केस जो ये स्ट्रिंग है ये फिर से पैटर्न फॉलो नहीं करती, तो हमारे पास आउटपुट आएगा फॉल्स। तो हमारे पास एक पैटर्न आएगा, एक स्ट्रिंग आएगी, हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग पैटर्न फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो ये प्रॉब्लम है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पास अगर एग्जांपल हम सही तरीके से समझ पाए तो ये तो हमें पता चल गया कि पैटर्न के अंदर जो भी कैरेक्टर आएगा उसके रिलेटेड एक स्ट्रिंग हम रजिस्टर करेंगे। कि अगर ए हमें एक बार मिला और हमें एक स्ट्रिंग मिली डॉग, अगर इनका एग्जिस्टेंस या हम इनको पहले एनकाउंटर नहीं किया है तो दैट मीन्स ये कैरेक्टर ए डॉग स्ट्रिंग के साथ रजिस्टर हो जाएगा। इन केस अगर हमारे पास उसके बाद पैटर्न में से ए और स्ट्रिंग में से डॉग दोबारा एनकाउंटर होते हैं तो सेम पोजीशन पे हमें सेम ही कैरेक्टर मिलना चाहिए और सेम ही स्ट्रिंग मिलनी चाहिए। अगर डिफरेंट मिलता है तो दैट मीन्स पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीजों की हमें जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट है एक मैप ऑफ कैरेक्टर टू स्ट्रिंग, मैप ऑफ कैरेक्टर टू स्ट्रिंग, जिसमें हम किसी भी कैरेक्टर के अगेंस्ट कौन सी स्ट्रिंग आनी चाहिए ये मैप करेंगे। इसको हम बोलेंगे अ मैप ऑफ कैरेक्टर को हम बाइट में लेंगे, बाइट टू स्ट्रिंग। और दूसरी हमें जो जरूरत है वो है हमें, अब क्योंकि हम कैरेक्टर्स को ऑलरेडी मैप में की मान के चल रहे हैं तो कैरेक्टर तो ऑलरेडी यूनिक हो जाएंगे। स्ट्रिंग की डुप्लीकेशन की हमें प्रॉब्लम है, तो स्ट्रिंग के लिए हम एक मैप बना लेते हैं फिर से, अ मैप ऑफ ऑलरेडी encountered string. Let's short this name, a map of string, simply I'm keeping it as simple। और इसको हम बोलेंगे a map of string, and since हमें सिर्फ इसकी एनकाउंटर चेक करना है तो हम इसको बूल ले लेंगे। That's it। नाउ अब हमें पता है हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन वाले के लिए होगा और एक ऑलरेडी यूज के लिए हो गया। हमें सिर्फ चेक करना है अब, और इसलिए हम इसको सिर्फ आइटरेट करेंगे। वी आर सेइंग फॉर नाउ बिफोर गोइंग दिस, सिंस दिस इज अ स्ट्रिंग, एस इज अ स्ट्रिंग, एंड इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं वो स्पेस सेपरेटर से अलग हैं, तो आई एम फर्स्ट calculating or taking out all the words in a map, in an array. So for that, in Golang there is a package strings and there is a function split. This will give you back an array of strings with whatever separator you have provided. So if I'm saying S is my string and my separator is space, in that case this will return me an array of S or array of strings.
and this array of string at each position a word is there. So now I have an array of string and a pattern string. Okay, and I first check what I'll apply is if length of pattern is not equal to length of array of string. The only difference which was there was this space, and I have removed that space. Now if the number of strings and the number of pattern characters is not equal, in that case I can simply say false, because if length is not equal, it cannot be equal. The string cannot follow the pattern at all. Now after this check, I know the lengths are equal and I have the exact number of strings as the pattern length. So I can simply run a for loop for I equal to 0, I less than length of pattern, and I plus plus. First of all, I need to check whether for a particular character I have encountered a string or not. So I can simply say if map of character to string, and in here I need to check the pattern character. So I will say pattern and ith position. By default, if it is not encountered, then the default value will be empty string. If it is equal to the empty string, that means I need to put in. If it is not equal to, that means I know something has occurred here. Okay, if it is equal, then let's first put the equal scenario. If I'm saying it is equal to empty string, that means I know this pattern is not registered with any string yet. So I can simply say okay, now this pattern is not registered with any string yet, but is this string already encountered? See, if this pattern is not registered and the string is encountered, that means the string is not following the pattern. So we need to check the existence of the string first, and we have a map of string here which is showing us that. So I'm saying if map of string, and here we will check whether we have encountered this string or not. So I'm saying array of string. From the array of string, I'm saying array of string, and at the ith position, if this value, since it's returning a bool, if this value is true, that means I know this is a false condition. String is not following the pattern. I can directly say is return the false part. Simple. Otherwise, simply say map of char to string and pattern of I. Now this time we are going to register it. What we are going to register it with? We are going to register it with the string array of string I. We have registered it with the string part. Now, since we have registered it, now that means this particular string is encountered. So we'll update the map of string also with that part. So we are also updating the map of string for the encounter part. And yes, we have encountered this string now. So we are marking its value as true. So that in next future, if this comes in, then this is this pattern, this array of string. Array of string I. So this has been encountered and we are setting its value as true. So that next time if this comes again, here it becomes true and we are returning the false in case of error case. So this if block we have encountered in case of empty. And if it is, see, now we are saying else part. Else if, now we know that
when it was not there, we have taken care of that part. If it is there, if the map of char to string in there, if the pattern of I is there and it is not equal to array of string at ith position. We are saying for a pattern, if the string we have registered and the string at this position where we are actually checking it, if they are not equal, that means it's a false scenario. Simply return false. Okay. And after encountering everything, we have run everything, we have gone through everything. At last, we are sure everything matched up. Simply return true. That's it. That's it for the solution. So what we did? We first created a map just to register for every character the string part. Then we check for the duplicacy of the string. For example, in this scenario, if we say A, for a single character, two different strings are there. So just to avoid this duplicacy, we created an encounter part, map of string. And then we divided this entire string into an array of different strings. And this what this array of different strings will represent? So it will represent something like this: dog, comma, cat, comma, dog. If we divide a string in this part, and every index is representing a string in itself. And if the length of this string is not equal to the length of pattern, then we can simply say that since the lengths are not equal, this string cannot follow the pattern at all. We are returning the false here. So this is a fail-safe position. At this position we have solved. And then we simply iterated over the entire pattern and the array of string just to check the conditions. And once we have satisfied all the conditions, at the end we are returning true. And in between, if any of the condition fails, at that time we are returning the false part. So that's all for this solution. Guys, please mention your doubts in the comments. Please like and subscribe. Thank you.